Namaste. Annyeong. Hello everyone, welcome back to my channel. So as you can see from my energy, I'm really happy. This is going to be so special. I just want to make this vlog so that ये memory मेरे साथ रहे. I am going back to India after 3 years, like more than 3 years, and I will meet my family after 3 years. Can you believe it? I just can't believe. So this is the day. This is not the day. I have my flight tomorrow, but today I have to take bus. Not today, tonight I have to take bus from Gwangju to Incheon, the airport. But my bus is at 3 a.m. रात के 3 बजे. So I just came back from my lab, finished all my work. Not all my work, I just wrapped up, came back. I have to do some last minute packing. I have done some, it's almost done, but I have to do some last minute packing. One of my bag is fully packed, another one is here, I will show you. But I am so excited, So मेरे साथ आप लोग भी चलोगे. I will show you everything. एयरपोर्ट में बहुत टाइम रहना है मुझे because I'm going at night. I will reach by 7 and my flight is at 11:40. So we will have fun. I will tell you what's going on here. कैसे जाते हैं, सब procedure. Let's have fun together. I'm so excited to meet my family finally. Let's go! Hello, so this is my bag right now. I have packed all my colorful clothes क्योंकि मुझे इंडिया में जाके colors पहनने हैं. Here is my notebooks and some papers which I need to read and write something. Professor ने छोड़ा नहीं मुझे ऐसे. So let's finish this, then I will take bath and take some rest. मुझे रात के 3 बजे निकलना है. See you soon. I'm at the bus stand and I can't contain my excitement. Oh my god. So this is my bus ticket and ये 3 बजे का बस है. We need to wait for around 40 minutes. चलो, let's go and sit there. सुबह का 8 बज रहा था and I reached airport and I was feeling a bit exhausted because रात को बिल्कुल नींद नहीं हुई थी. But कोई नहीं, we have a plane to catch. Let's go. So I am waiting beside the Air India counter. In 1 hour they will start giving the boarding passes and first they will check my luggage, scan it and then they will give me the boarding pass. जब तक boarding pass नहीं मिलती है ना तब तक मुझे बहुत anxiety होती है. Thank God I can relax right now. In Incheon airport, you can see these robots roaming around. They are there to help you, guide you. Done with my security checking. सब कुछ हो गया. Now I can relax, have food. I'm really hungry. Let's find a place to eat and drink coffee. There are many options actually. Incheon airport is full of restaurants. सब कुछ है. So I feel like we can go to this Dunkin' Donuts. So I bought a classic donut and ordered my coffee. I was waiting. This was the buzzer. Let it buzz. So I received my coffee and it's a cinematic view for you guys. This is what I was doing alone. मतलब कुछ काम नहीं था. And I had a lot of time to kill. So this is the vanilla latte I ordered. It really helped me to kill some of my exhaustion. And this is the bill. It wasn't much. I mean, same like Dunkin' Donuts. बाहर भी जैसा charge करते हैं, यहाँ भी same charge करते हैं. But in India, I guess airport में food prices are higher. But it's not like this here. Let me show you guys my outfit. So it was already cold in Korea, so I was wearing a black sweater over that, a sweater vest and black jeans. But it wasn't cold in Kolkata
and by the time I reached Kolkata, it was a different story. Finally, it's time to board the plane. The wait is over. I was so much bored. Like, it feels like lifetime to wait for your plane, train, anything. So let's go. Let's go home. I'm excited. So let's talk about Air India for a sec. I'm flying with Air India for the very first time, and it wasn't bad actually. Everyone told me and scared me ki it's gonna be bad, but the service was good, seats were comfortable, big enough for me at least, and food was okay. I could eat. ऐसा बहुत टेस्टी कुछ नहीं था, but it was okay. And then the best thing, मेरे पास में कोई नहीं बैठा हुआ था. I mean, the middle seat was खाली and I enjoyed my 10-hour long journey. एकदम हाथ पैर फैला के मैं बैठ पाई because कोई नहीं था बीच में. At this point, my plane was exactly flying over Kolkata. मुझे लग रहा था कोई मुझे उतार दो, मैं क्यों दिल्ली जा रही हूँ, फिर मुझे फ्लाइट लेके वापस कोलकाता आना था, बट क्या करें. You guys, finally I'm in India. Oh my God, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वापस आ पाई. मतलब कोविड ने तो जीना हराम कर दिया था. Finally I reached India. अभी तक कोलकाता पहुंचना बाकी है. आई एम इन दिल्ली एयरपोर्ट बट द इंटरनेट सिस्टम सक्स हियर. मतलब फ्री इंटरनेट अवेलेबल है बट मुझे इंडियन नंबर या कोई भी फ़ोन नंबर देना पड़ेगा, फिर एसएमएस के थ्रू वो ओटीपी जनरेट होता है ना, उससे मुझे फ्री इंटरनेट मिलेगा. एंड मैं इंडियन नंबर कहाँ से लाऊँ? आई डोंट हैव इट. और मैं अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. मुझे बताना है मेरा फ़्लाइट का टाइमिंग चेंज हुआ है. आई कैन नॉट टेल देम एंड इट सक्स. आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम कोरिया, जहाँ पे हर जगह पे फ्री इंटरनेट होता है, बीच पे जाओ, माउंटेन में जाओ, इट फील्स लाइक सो बैड. मैं बस ये सोच रही हूँ अगर कोई बाहर से आए, मैं तो इंडियन हूँ फिर भी मैं समझ सकती हूँ, बट अगर कोई फॉरेनर आए और उसको इंटरनेट यूज़ करने का ज़रूरत पड़े यहाँ पे एयरपोर्ट पे, वो लोग क्या सोचेंगे? हाउ कैन दे एक्सेस इंटरनेट? दैट्स सो सैड. दिल्ली एयरपोर्ट में मुझे 3-4 आवर्स वेट करना था एंड मुझे बहुत 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 ज़्यादा भूख लग गई थी. तो सो आई बॉट दीज 2 समोसे एंड कोक एंड जस्ट गेस हाउ मच वाज द प्राइस. इट वाज 200 for 2 samosas. So this is how my family received me on the airport. I felt so overwhelmed. By the way, मैंने मजाक में उन्हें बोला था कि मेरे लिए फ्लावर्स लेके आना, एंड मेरी मम्मी पापा सच में लेके आए. Best moment of 2022. Hello from editing Deepa. So I am back in Korea. I'm missing home. मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और देख रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है. पता नहीं कब फिर से वापस जाऊँगी. Let's not talk about this. तो मैं ये बोलने वाली थी कि I didn't take any clips after reaching कोलकाता. मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई and I forgot about the video. And नाउ आई विल पुट सम क्लिप्स जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स और सिस्टर को गिफ्ट्स दे रही थी, जो कि मैं फाइनली मतलब आई एम एबल टू बाई गिफ्ट्स फॉर देम. सो आई वांट टू शेयर दिस विथ यू गाइज. सो जस्ट एंजॉय द वीडियो एंड कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिख देना. एंड आई एम सॉरी कि मैंने बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं बनाए बिकॉज आई एम रियली बिजी. सॉरी अबाउट इट. न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं. ओके बाय बाय. तो पापा के लिए मैंने स्पोर्ट्स शू लिया था एंड आई वॉज लिटिल बिट ऑफ स्केयर्ड कि उन्हें आएगा कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली एकदम फिट आया. ही लाइक्स टू प्ले स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, कभी कभी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं. तो आई होप उनको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू हैव. আমি ম্যাচিং জামা এনেছি. এটা তোমার আর এটা তোমার. थैंक यू. खोलो. फिर हम लोग सब ये पहन के एक साथ पहन के फोटो खींचेंगे.
ओ मैं भी आ जाती हूँ लेके। सो मम्मी पापा के लिए मैं बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स लेके गई थी सो दैट दे स्टे हेल्दी एंड देन बहुत सारी ढेर सारी चॉकलेट्स फॉर एवरीवन एंड एवरीवन लाइक्ड इट आई एम सो हैप्पी थैंक यू। देन इट वाज माय सिस्टर्स टर्न एंड शी गॉट मोस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट्स उसका बनता भी था बिकॉज उसकी शादी थी तो मैं बहुत सारे उसके लिए शीट मार्क्स लेके गई थी जिससे वो ग्लो करने लग जाए देन दिस टू toners. I think Korean toners are the best. If you're interested, please buy these Cosrx toner. Then these pimple patches I got for her. You can stick over your pimple और 24 hour में redness कम हो जाता है. And lastly, this box of full of goodies. I love to pamper my sister, so earrings, fake nails, more earrings, and ढेर सारे lots of lip tints. If you love lip tint, try this one, Etude House के fixing tint. Then this was a mask और फिर उसको आई शेडोज चाहिए थे because कोरिया में बहुत सारे glittery आई शेडोज मिलते हैं and these are free stuffs I get from Korean shop. सब मैं लेके गई थी उसके So लिए. this was the end of this video. I hope आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को भी खुशी हुई हो मेरी खुशी के साथ. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्यार जताना. I love you guys. I missed you so much. I am really busy because I want to graduate next semester और मुझे बहुत सारे काम करने हैं. Still, I don't want to miss out on YouTube. मतलब I don't want to be irregular on YouTube. मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी. I have some videos. I will edit those and upload soon. So see you next week. Bye bye. Love you. Follow me on Instagram to stay updated. Bye. हेलो नमस्ते अन्यों